Hello, students. How are you? I hope all of you are enjoying your vacations and you are safe. Students, open your science book, unit number 12, that is solar system. In our last lessons, we have learned about the solar system. Then we learned about different objects present into the space. We learned about the planets, then we learned about stars and moons. Today we are going to learn about the difference and similarities between the planet and moon. Open book page number 99. Page number 99. We will start with the difference between a planet and a moon. An object that orbits the sun is called a planet. However, if it orbits a planet instead of the sun, it is called the moon. So, do you know what is moon? What is the difference between moon and the planet? Actually, both are revolving around the other objects. But what is the difference between the planet and the moon? Planets orbit around the sun, but moon orbit around the planets. Have a look on the picture. In this picture, you can see the clear difference between the moon and the star, moon and the planet. Earth is a planet and it is revolving around the sun. This blue circle is showing the path of the earth. Earth is revolving around the sun. But you can see the small moon that is revolving around the earth. So this is the difference between the moon and the planet. That planet move around the sun and moon move around the planet. Moon is not moving around the sun. It is moving around the planet. This is the main difference between the planet and the moon. Our next topic is similarities between a planet and a moon. Planets and moon have no light of their own. They only reflect the sun's light. Planets and moons revolve around another space body. If we see the difference of the light of the planet and the moon, both are having no light. Both having no its own lights. They only reflect the sunlight. Second thing, we have talked about the revolution of the planet and the moon. Planet move around the sun and moon move around the planet. So earth revolves around the sun, taking 365 days to complete one revolution. If we talk about the revolution of the earth, कि earth sun के गिर्द कितना time लेती है घूमने में, तो earth takes 365 days in one revolution. अगर earth sun के गिर्द घूमे और एक पूरा circle 365 days में complete करेगी. And the moon revolves around the earth. और moon earth के गिर्द घूम रहा है and it takes 28 to 9 days. Third difference is of the phases. The light we see on the moon is the reflection of the light of the sun. Sometimes from where we see it, the moon is only partially light up. Sometimes we see the whole face of the moon light up. The amount that we see light up gradually increases or decreases. We call these phases of the moon. Third main difference between the earth or the planet and the moon is of the phases of the moon. Earth is having no phase, but is having different phases. It means can you see at night time, अगर आपने देखा हो कभी मून को आसमान के ऊपर, you can see different phase or different shapes of the moon. आपको मून की different shapes नज़र आती है, जैसे कि आपको बुक की पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि different shapes क्यों नज़र आती है. It depends कि क्योंकि मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं है, तो मून के जितने पोर्शन के ऊपर लाइट पड़ती है हमें जस्ट वही पोर्शन नज़र आता है. तो अगर फुल मून के ऊपर लाइट पड़ रही है तो हमें फुल मून नज़र आता है. अगर जस्ट उसके कुछ पोर्शन पे लाइट पड़ रही है सूरज की, तो देन इट विल जस्ट वी कैन सी दैट पार्ट. तो दैट्स वाई वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून ऑन डिफरेंट डेज. जैसे कि आप ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि फुल ब्लैक मून के हम जहाँ पे राइट साइड पे है फुल ब्लैक मून है. इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ी और वी कांट सी द मून एट दैट नाइट. ठीक है, एक राइट नाइट आती है फुल मंथ में जिस टाइम में हमें मून नज़र ही नहीं आता, और वन डे पे आपको फुल गोल्ड मून नज़र आता है बिकॉज फुल मून उस दिन लाइट अप हुआ होता है. इस तरह डिफरेंट डेज के ऊपर डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं आपको मून की.
जस्ट हैव अ लुक ऑन द पिक्चर। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि डिफरेंस हमने जो कहा था कि प्लैनेट एंड द मून बोथ आर नॉट हैविंग लाइट, दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द मून एंड द प्लैनेट, के दोनों के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। इट मीन यहाँ पे इस पिक्चर में हम अर्थ को देख रहे हैं और अर्थ का कुछ पोर्शन ब्राइट है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, कि जिस पोर्शन के ऊपर लाइट सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज शोइंग दैट वी कैन सी दैट, एंड द अदर पार्ट इज डार्क, बाकी पिछला पोर्शन डार्क है, और जहाँ पे सनलाइट पड़ी होती है दैट शोज द डे टाइम। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अर्थ, बिगर साइज की आपको अर्थ नज़र आ रही है, देन मून एंड द सन, आपको ब्राइटर सन नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर, बिकॉज ये पिक्चर इस तरह से ली हुई है कि सन थोड़ा दूर है, दैट्स व्हाई इट इज़ लुकिंग स्मॉल। हालांकि सन आपको पता है कि मून और हमारी अर्थ की निस्बत बहुत बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सन इज़ ब्राइट, सन की अपनी लाइट है, इट इज़ ब्राइट, और सन की लाइट पड़ रही है मून के ऊपर जो कि मिडिल में स्मॉल साइज़ का नज़र आ रहा है आपको, और इसके थोड़ा सा पोर्शन रोशन है, लाइट अप है। और अर्थ का भी आप देखिए सन फेस वाली साइड पे जो है पोर्शन दैट इज़ लाइट अप, और बैक वाला पोर्शन डार्क है। तो इट मीन्स कि प्लैनेट एंड द मून बोथ आर नॉट हैविंग इट्स ओन लाइट, दोनों की अपनी लाइट नहीं है, दे रिफ्लेक्ट सनलाइट, इनके ऊपर सिर्फ सनलाइट पड़ती है तो ये हमें नज़र आते हैं। इन दिस पिक्चर वी कैन सी सन इन द मिडल, और साइड पे अर्थ आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और अर्थ कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज, आपको नज़र आ रहा है कि 365 डेज में अर्थ अपना एक गोल चक्कर सन के गिर्द कंप्लीट करता है। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द मून, के मून इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ, और मून अपना वन कंप्लीट सर्कल जो है वो रेवोल्यूशन है दैट कंप्लीट्स इन 28 डेज, 28 डेज में कंप्लीट करेगा मून अपना रेवोल्यूशन। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द फेजेस ऑफ द मून, के हम आपको पता है जब आप नाइट टाइम में मून को ऑब्जर्व करते हैं तो वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, मून की डिफरेंट शेप्स हमें नज़र आती हैं, और ये इसीलिए होते हैं बिकॉज सनलाइट पड़ती है जितने पोर्शन के ऊपर वी कैन सी ओनली दैट पार्ट। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द फेजेस ऑफ द मून, इन द मिडल देयर इज़ द अर्थ, आपको सनलाइट राइट साइड पे नज़र आ रही है, और सनलाइट मून के जिस पोर्शन पे जितने पे पड़ रही है दैट इज़ शोइंग द फेजेस ऑफ द मून। Okay students, today we have learned about the similarities and the differences between a planet and a moon. You have to revise all this. In the next lesson we will learn about the satellites and the space telescope. Revise it, and if you have any queries you can ask from me, or you can call to your branch. Thank you. Bye.